बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, हम आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो इस बुक अकाउंटिंग द बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजन मिग्स एंड मिग्स 9th एडिशन से मैं ले रही हूँ। आज जो चैप्टर हम सॉल्व करेंगे वो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इस चैप्टर में हम जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉब्लम ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम 2A-1 says Elizabeth Carver, a certified public accountant, resigned from her position with a large CPA firm in order to begin her own public accounting practice. The business transaction during September, while the new venture was being organized, are listed below. These are the transactions. On September 1st, Carver opened a bank checking amount in the name of her firm, Elizabeth Carver, certified public accountant, by depositing $32,000, which she had served over a period of years. जी गर्ल्स, तो अब हम इसकी जर्नल बनाएंगे। हम जर्नल की हेडिंग देंगे। जर्नल का फॉर्मेट है डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, रुपीज़ एंड रुपीज़ इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। बिजनेस के नेम से या बिजनेसमैन के नेम से हम जर्नल का फॉर्मेट देंगे। एलिज़ाबेथ कार्वर्स जर्नल। हम डेट मेंशन करेंगे September 1st. Recording of these entry, as this entry is belongs to introduction of capital in the business or investment in business, so the entry will be cash account will be debited and Elizabeth Carver's capital is credited. Being cash invested into business. Amount will be $32,000. Our next entry will be purchased a small office business located on a large lot for a total price of $91,200, of which $48,000 was applicable to land and $43,200 to the building. A cash payment of $18,240 was made and a note payable was issued for the balance of the purchase price. इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी। As land and building are purchased and both are asset, so asset increases and makes debit, land account debit and building account debit. और जैसा कि यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की अमाउंट भी इन्होंने क्लियरली मेंशन की है, लैंड इज 43,200 एंड to the land 48,000 was applicable to land and 43,200 applicable to building. So the credit amount will be cash and note payable, as the cash amount was provided of 18,240. And the remainder amount is being transferred to note payable if we plus 43,200 into 48,000 and subtract from it 18,240, the balance will be 72,960.
This entry is made on September 10th, and a narration will be stated being land and building purchased. We put a line below this to separate it from the other entries, and put a bracket on around the narration. Our next entry will be purchased a microcomputer system from Computer Stores Incorporation for $4,680 in cash. Now its entry will be on 15th September. Office equipment debit, account debit, and we purchased it on cash, so cash account is credited as it decreases the cash. Bought a micro computer amount is also recorded. Next entry is on September 19, purchased office furniture, filing cabinets, and typewriter from Davidson Office Supply Company at a cost of $3,960. A cash down payment of $720 was made. The balance to be paid in 3 equal installments due on September 28, October 28, and November 28. The purchase was on open account and did not require a signing of a promissory note. This is जी, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है जो कि ₹720, उसके लिए हमने कैश पेमेंट की है और बाकी का जो है 3 किस्तों में ड्यू हो गया। तो अब इसकी जो एंट्री होगी दैट विल बी ऑन 19 सितंबर। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड नोट बीइंग, इस पे लिखा है कि किसी भी तरह का प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं किया गया। इट मीन्स कि इसके जो सेकंड अकाउंट होगा दैट विल बी अकाउंट पेएबल क्रेडिट। द ऑफिस इक्विपमेंट जो थे वो तकरीबन $3,960 के थे, जिसमें से 720 कैश में पे हो गया और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी अकाउंट पेएबल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे होगी और बाकी की अमाउंट 3,240 बनती है। बीइंग इक्विपमेंट्स परचेज्ड एंड amount due will paid in 3 installments. Brackets, and narration is completed. In next entry, or at September 26, a 140 monitor in the microcomputer system purchased on September 15 stopped working. The monitor was returned to Computer Stores Incorporation, which promised to refund the $140 within 5 days. जब हमने वो कंप्यूटर्स परचेज़ किए थे, $140 का एक कंप्यूटर था, उसमें से 15 कंप्यूटर चलना बंद हो चुके हैं और कंप्यूटर स्टोर्स वालों ने ये प्रॉमिस किया था कि आप 5 दिनों में अगर लौटा देंगे तो हम आपको एक कंप्लीट रिफंड दे देंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि विद इन 5 डेज जी, अब इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी। ऑन 26 सितंबर अकाउंट रिसीवेबल,
अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमें विद इन 5 डेज ये अमाउंट रिफंड हो जाएगी, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं। और ऑपोजिट साइड पर हमारे पास, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट अब वापस रिटर्न हो रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग computers returned, and amount was $140. On 28 September, paid Davidson Office Supply Company 1080 cash at first installment due on account payable for office equipment. जो ऑफिस इक्विपमेंट हमने उधार पे परचेज किए थे, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 28 सितंबर को ड्यू थी। ये उन्होंने पिछले ट्रांजैक्शन में दिया था। अब वो डेट आ गई है और हम उस पे डेट पर 1080 रुपीज़ उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने लगे हैं। अब इसकी एंट्री करेंगे हम। सितंबर 28 अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अब हम जो अकाउंट पेएबल थे, हमारी क्रेडिट लायबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट हो जाएगी। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है और वो भी डिक्रीज हो रहा है पे होकर, तो वो क्रेडिट हो जाएगा $1080 से। बीइंग amount due to Davidson paid. हमारी लास्ट एंट्री है 30 सितंबर की। रिसीव्ड 140 कैश फ्रॉम कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड ऑन सितंबर 26 सितंबर को जो अमाउंट हमने जो कंप्यूटर वापस किया था, हमें पेमेंट मिलनी थी $140 की, वो पेमेंट अब हमें रिसीव हो गई है 30 सितंबर को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसकी एंट्री जो होगी वो इस तरह होगी। क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट इंक्रीज होके डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, डिक्रीज होके क्रेडिट हो जाएंगे फॉर $140 बीइंग कलेक्टेड इन फुल। अब यहाँ पर हमें कुछ हिंट्स थी। प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन, वो हमने कर लिया। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अकाउंट टाइटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ज़रूरी नहीं कि हमें क्वेश्चंस में चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन हो, लेकिन यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट टाइटल्स दिए हुए थे, हमने ये टाइटल्स यहीं से इन ट्रांजैक्शंस में यहीं से सिलेक्ट किए हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।